Sixth schedule provides autonomous councils of elected representatives, small parliaments of indigenous tribal people, where they can decide how these mountains should be managed. These are people from here, from this Mars or moon that I was speaking. They know how to manage it. They always think of next generations, not just for today. Whereas right now we are governed like a colony by a bureaucrat or a lieutenant governor who comes here for just 3 or 4 years and goes back. So without understanding this place they come, and sure they'll make many mistakes, and we'll be there to bear the consequences. This is when it is the best of persons who come. They'll make mistakes. The worst ones will sell off these places to corporates and industries who are waiting like hawks on the fence line to see whether Ladakh is protected or open. न बोलते हम कि खतरे में हमारा घर, न देखा हो तो जाके देख लो यूट्यूब पर। Have you Mr. Sonam Wangchuk का पहाड़ पर, बैठे वो -20 में खेल के अपने जान पर, मांगी है हमने। Over the 21 days, roughly 40,000 to 60,000 people have come. Every day, 2,000 to 3,000. In a democracy, governments should be sensitive to what people want. That's what democracy is. It's not what one person's whim or ego decides. And that too, backtracking on a promise they themselves made. This is neither democracy nor simple ethical behavior. बल्ली सिंह चीमा की ये रिवॉल्यूशनरी कविता है, तय करो किछ और हो, 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 आदमी के पक्ष में हो, आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर हो, आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर हो, खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रेंग कर मर मर जीना ही नहीं है जिंदगी, कुछ करो की जिंदगी की, कुछ करो की जिंदगी की दौड़ ना कमजोर हो, कुछ करो की जिंदगी की दौड़ ना कमजोर हो, तय करो किस और हो, तय करो किस और हो. While our mainstream media seems blatantly compromised, which is a very, very sad thing for a democracy, a mother of democracy, where the fourth pillar is crumbling with money and pressure, I'm moved again by the citizens who have become themselves journalists, and it's spreading through and among the people. And that's the biggest hope. And I'm sure at some point, these media channels, their conscience will not let them sleep if they are journalists and not businessmen and salesmen in the garb of journalism. जब से यूटी बना उससे लगातार 3-4 साल हो गए, लगातार गवर्नमेंट ने वादे पे वादे किए गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने पहले एलएचडीसी का जो इलेक्शन होने से पहले हमारे होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि 15 दिन में लद्दाख को 6 शेड्यूल ग्रांट किया जाएगा। इलेक्शन हुआ, जीता, उसके बाद कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगा तो हाई पावर्ड कमेटी बनाया, फिर उसके बाद और कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर एमएचए ने बुलाया, उसके बाद सब कमेटी बनाए और आखिर में क्लियरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते तक उन्होंने क्लियरली डिनाई किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं देंगे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के साथ बहुत चालाकी के साथ खेला है, इसको डिले किया जब तक मॉडल ऑफ कंडक्ट ना आ जाए।
statehood or legislative assembly at the top, where the major chunk of budget is. So if it is misused, then local people will have nothing but resentment. And resentment in these sensitive areas is never good for the country's security, flanked by Pakistan on one side and China on the other side. 2019 से पहले हम जब स्टेटहुड में था तो लद्दाख खतरे में नहीं था, आपको भी पता है। और अगर अब जब से उन्होंने हमें यूटी दिया है तब से लद्दाख बहुत खतरे में। यहाँ पर लोग ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, यहाँ पर बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर बेरोजगार की संख्या बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर एक भी गेजेटेड पोस्ट नहीं निकला है जब से यूटी आया है। जब से यूटी आया है, यूटी हमारे करगिल के लीडर्स हो, लेह के लीडर्स हो, वो नहीं चला रहा है, हमारे कौम को सेंटर से चला रहा है। कोई वहाँ से धक्के दे रहे हैं कि ये करो, तब चल रहा है। इसीलिए 6 शेड्यूल और स्टेटहुड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आने का एक मेन मकसद ये है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसके लिए जो फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन टू सेव क्लाइमेट है ना, ये सिर्फ लद्दाख के अकेले की बात नहीं है। अगर लद्दाख जलेगा तो ये नीचे तक सारा नॉर्थ इंडिया में आग लगेगी। यहाँ पे ये ना अभी हम वी वोंट लेट इट बिकम द नेक्स्ट जोशीमठ उत्तराखंड, जहाँ पे इतना माइनिंग हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के पहाड़ को, वहाँ के इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि लद्दाख भी दूसरा जोशीमठ बने। कल को यहाँ के भी लोग, यहाँ जब लैंडस्लाइड्स आएंगे, इतना बुरा नेचर डिस्ट्रक्ट होगा, तब हम ये नहीं चाहेंगे कि ये जगह ख़राब हो। इसलिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अभी से हम बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम पहले, इससे पहले कि कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए और उसके बाद हम चीज़ों को क्योर करें, उससे पहले प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। 6th schedule, if it was there, would have mandated that any land would be taken only with consultation with them. We don't mind sharing our solar energy with the rest of the nation. Actually, that's an honor, but it has to be done so that there is minimum damage and maximum good to the nation. But right now, they're not being consulted. In fact, they tell us that officers come and bulldoze their way to mark the land that they require. They think it is barren land, but it is actually pasture lands. Government ne manyu tangse no mata ta se pata ina ngata na statim na ngata na sirkau ngata gosha jo khaktan no ngata na dare se chi sungchop chi ngata na Ladakh la mana nganmar japo cha ta tezuk sik ta sa japo ja te ko nyon tamano pata sen tan jo thama yon tan chotena te thama khaktan statim bo te sik shul bo ma khaktan gosha masus nga cha nga lor jachu de gupchu korgu chachan mana la sindiri tak mana चिक्ची दू ngata Ladakh pipia indus skopcha pipia ne इन जो भी हो बिल्कुल कम नहीं किया सर डॉक्टर साहब वालिया। हमने सोचा था इनके साथ खड़ा होने का बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग, देयर इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग। हिमालयास को बचाना है कि दिस इज वेयर वी गेट आवर वाटर फ्रॉम, स्पेशली ऑल द रिवर्स। ऐसे हमें इसको तोड़ते जाएंगे इस नेचर को, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं रहेगा जीने के लिए। तेना ngata Ladakh sapa thangme tene chingna chi kena gyapskyor yong go shespo tene ha goste gyapskyor yong go chpa dimberang tene itus pega ma khachan thondu kasene. The people who are supporting the ruling government has been silent till now. They only think as in political agenda, and they don't really care about the people over here. And I don't know
what are their thinkings and what are their thoughts. I mean, they are also from Ladakh and they've turned a blind eye towards this situation. Without any protection, safeguard, our farmers, our shepherds mainly, the famous Pashmina or Kashmir goat shepherds who are in the east by the Chinese border, are losing their pasture lands left, right and center. To the south, they are losing their land to corporates, industrial parks and plants, which are taking not small lands, 20 to 40,000 acres, which is 150 square kilometers. And people don't even believe that this is happening. So on 7th April, some 5 to 10,000 people will drive and march to where these power plants are, to show what's happening from Indian industries, and to the north where encroachment is happening. According to the shepherds, they'll see the on-ground state and the plight of these poor nomads who will perhaps have to sell their goats and yaks very soon and become menial laborers in the cities. With them will be lost 1,000 years old tradition and culture of pastoralism, of beautiful tribal cultures from the face of the planet. After I end my fast, it will be a relay by women's groups here, and then youth groups, and then clergy and monks from the monasteries, elderly, and then it will be rotated, and I'll come again and sit. So it will continue.